Welcome students to this video class of class 7. We are going to start with a new chapter of mathematics of class 7, that is decimal. This is the third chapter of mathematics of class 7, decimals. Till now we have completed two chapters, that is integers. We completed the first chapter, and second chapter we have completed fractions. Now we are going to start with a new chapter, that is decimals. First of all, what is decimal? What is decimal? The number expressed in decimal forms are called decimals. The number expressed, the numbers expressed in decimal forms are called decimals. Each of the numbers, example numbers 6.8, 16.73, 7.364, 7.364, and so on. All these are examples of decimals, that is numbers expressed in decimal forms are called decimals. A decimal has two parts. A decimal has two parts. A decimal has two parts, namely दो पार्ट होता है डेसिमल के पास. एक होल नंबर वाला पार्ट, दैट इज this, that is whole number part, whole number part, और दूसरे में decimal part. यानी कि किसी भी डेसिमल में दो पार्ट होता है. The two parts are separated by a dot. That is, on the left side of dot, that is whole number part, and on the right side of dot, it is the decimal part. For example, 71.5970. That is, on the left side of dot, it is whole number part, and on the right side of the dot, it is decimal part. आइए देखते हैं डेसिमल प्लेसेस. The number of digits contained in the decimal part contain the number of digits contained
in the decimal part the number of digits contained in the decimal part of a decimal that is decimal places में देखिए the number of digits contained in the decimal part of a decimal part of a decimal the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places that is decimal places are the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. For example, 5.74 has two decimal places. It has two decimal places. 8.536 has three decimal places. It has three decimal places. 8.536 has three decimal places. बहुत सिंपल है. डेसिमल प्लेस कितना है इसमें 5.74 में दैट इज 2 डेसिमल प्लेसेस. इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 7/10. Similarly, place value of 5 is 5/10. Place value of 6 is 6/100. Not 100. Place value of 10, 100 and 6,000. That is 6,000. 7/10. इसको 7/10 नहीं बोलते, 7/10 बोलते हैं. दैट इज 7/10. 5/10 and this is 6,000. 6,000. This is decimal places. मैंने आपको बता दिया. आइए देखते हैं a new term that is like decimals and unlike decimals. What is like decimal and what is unlike decimal?
like decimals. लाइक डेसिमल्स क्या है? Decimals having the same number of decimal places are called like decimals. Decimals having the same number of decimal places. Same number of decimal places. Decimals having same number of decimal places is called like decimal. Is called like decimals. Decimals having same number of decimal places is called like decimals. लाइक डेसिमल्स कौन कौन हो गए? जैसे 5.74, 6.79, 8.01. इसमें आप डेसिमल प्लेसेस देखो कितने हैं? 1 2. इसे 1 2 1 2. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? दैट इज डेसिमल प्लेसेस. इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं. एक और देखिए 9.37, इसमें भी 2 है. तो all are like decimals. Why like decimals? Because these decimal numbers, they have same number of decimal places. These decimal numbers, they have same number of decimal places. Unlike decimal, आइए देखते हैं एक नया टर्म, that is unlike decimals. Unlike decimals. Unlike decimals किसे कहते हैं? That is all decimals having different number of decimal places. Having different number of decimal places. Decimals having different number of decimal places. Decimals having different number of decimal places, they are called unlike decimals. They are called unlike decimals. This is like decimal, this is unlike decimal. Unlike decimal में क्या है? Decimals having different number of decimal places. Decimals having different number of decimal places. For example 5.792, 5.01, 5.7. इसमें देखिए, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3. इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2. और इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1. तो these decimals have different number of decimal places and hence they are called unlike decimals. चलिए अब तक हम लोग डेसिमल का डेफिनेशन हम लोग पढ़े. आइए देखते हैं डेसिमल के बारे में जानकारी. इंपॉर्टेंट रिजल्ट. किसी भी डेसिमल नंबर में पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस, पुटिंग any number of zeros
to the extreme right, to the extreme right, putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part of a decimal does not change its value, does not change its value. That is, putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part. Decimal part क्या है? For example 5, मैं एक नंबर लिख देता हूं, that is 5.72. This is the number 5.72. ये नंबर है putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part. Decimal part इसमें क्या है? 72 और whole number part क्या है? That is 5. तो putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part, इसमें कितना भी हम जीरो डाल दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Extreme right of the decimal part of the decimal number does not change its value. यानी डेसिमल पार्ट में नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो हम कितना भी डाल दें, देयर इज नो चेंज इन इट्स वैल्यू. 5 that is equal to 5.720 is equal to 5.72 is equal to 5.7200 and 5.72000000 that is equal to this much. ये हो गया. इतना हो गया. Putting any number of zeros to the extreme right, putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part. Decimal part क्या है? 72. इसके बाद हम कितना भी जीरो डाल दें, it does not change the value. That is, डेसिमल पार्ट के बाद हम कितना भी जीरो डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये देखिए डेसिमल पार्ट है, इसके बाद हम कितना भी जीरो डाल दें that is equal to 5.720, that is equal to 5.72, that is equal to 5.72. This is an important result and the students must remember this result. अगर हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे 5.720 का, तो प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होगा? दैट इज वंस, टेंस,
टेंस, टेंस के बाद डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे हो जाएगा टेंथ, हंड्रेड, टेंथ, हंड्रेड, टेंथ, हंड्रेड, टेंथ, हंड्रेड, डेसिमल पॉइंट, वंस, टेंस। डेसिमल पॉइंट क्या है? दिस इज डेसिमल पॉइंट, दिस। डेसिमल पॉइंट ये हो गया। डेसिमल पॉइंट के बाद वंस प्लेस में क्या है? दैट इज 2। टेंस प्लेस में क्या है? वंस प्लेस में क्या है? दैट इज 5, दैट इज यूनिट्स प्लेस। टेंथ प्लेस में क्या है? दैट इज 7। 5 हो गया वंस प्लेस पे, डेसिमल पॉइंट, 7 टेंथ प्लेस पे, एंड 2 इज एट द 100th प्लेस। तो 5.72। इसके बाद आप 1000 प्लेस पे 0 डालते जाइए, लाख प्लेस पे 0 डालते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया 5.72 का। दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट। Students, with this we have seen all the definitions of decimals along with place value chart, and an important result that putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part of the number does not putting any number of zeros to the extreme right, सबसे right side में to the extreme right of the decimal part of the number does not change its value। अगर आप 1 जीरो भी डालोगे, 2 जीरो भी डालोगे, एंड 100 जीरो भी डालोगे at the extreme right of the decimal part of the number, it will not affect its value। अगले क्लास में स्टूडेंट्स we will be learning how to compare decimal numbers and method of converting a decimal number into a fraction and a fraction into a decimal, that is method of converting decimal number into fraction and a fraction into a decimal number along with comparison of decimals। Thank you।